Our first chapter is solid state, and you know about the matter. What is matter? Anything that has mass and occupies space, it is known as matter. And there are three states of matter: solid state, second is liquid state, and third is gaseous state. In 11th standard you have learned about the liquid state and gaseous state, and we will discuss about the solid state in 12th standard. The particles of solid state are closely packed. The particles of liquid state are loosely held, and the particles of gaseous state are very, very loosely held. You know all these things. And solids possess particular shape and volume. Liquids possess particular volume. They occupy the shape of the container, and gaseous possess the entire volume of the container in which it is placed. It has no particular shape. So these are basic characteristics of solid state, liquid state, and gaseous state. You know about the melting point and boiling points of all these three states. So here our topic is solid state, and it is our first chapter in chemistry. And solids are classified into two types. First type is crystalline solid, and second type is amorphous solid. The solids in which the constituent particles are arranged in a regular definite pattern, it is known as the crystalline solid. In amorphous solid, the constituent particles are irregularly arranged. There is, in case of crystalline solid, there is long range order of constituent particles. Constituent particles can also be called only particles, and in case of amorphous solid, there is only short range order of constituent particles. The crystalline solid, the solids are formed by the combination of constituent particles, and these particles may be atoms, molecules, or ions. Constituent particles may be atoms, molecules, or ions. We can say only particles of all these constituent particles, that is atoms, molecules, or ions. And the solid is formed by the combination of constituent particles, and the crystalline solids possess sharp melting point. They melt over a definite temperature. It is known as a sharp melting point. And amorphous solids melt over a long range of temperature. First, the temperature gradually increases throughout the heating process, and first the amorphous solids becomes soft, and then it becomes in liquid state. Crystalline solids का एग्जाम्पल अगर हम चाहें, दैट इज NaCl, डायमंड है, ग्रेफाइट, एक्सेट्रा. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल आता है रबर, ग्लास, प्लास्टिक, etc. If we observe these things, then if we supply heat to all these objects, then first of all these objects become soft, and after
that it will convert into the liquid state. So there are two types of solid, that is crystalline solid and amorphous solid. So all these are basic characteristics of crystalline solid and amorphous solid. 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स हियर. वन मोर क्वेश्चन इज, दैट इज distinguish between crystalline solid and amorphous solid. It is another question and it is your homework. That is the you will write the points of distinction in between crystalline solid and amorphous solid. Now here, so these are 2 types of solids. Here we will discuss about the crystalline solid, and there are 4 types of crystalline solid. First type is ionic solid. Second type is covalent solid. Third type is molecular solid. And fourth type is metallic solid. So first type is ionic solid. The solid in which ionic bond is present, that solid is known as ionic solid. And you know about the ionic bond, the electrostatic force of attraction in between positive and negative ions, it is known as ionic bond. And the solid in which ionic bond is present, it is known as the ionic bond. And you know about the formation of ionic bond. Ionic bond is formed by the transfer of electrons. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल NaCl. You have learnt about NaCl in secondary standards also, and it is the ionic bond. इसको उर्दू में कहा जाता है आयनी बंदिश. Now here, ionic solids are hard and brittle. हार्ड है इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा that will be high. Ionic solid. So it is about the ionic solid. Now second solid is covalent solid. Covalent solid. One more thing here, that is suppose it is one of the unit cell. I will tell you later on what is the unit cell. It is the, suppose it is simple cubic unit cell, and these are constituent particles. These are constituent particles, and in ionic solid these particles are oppositely charged ions. यहाँ पे अगर पॉजिटिव आयन है, यहाँ निगेटिव आयन, यहाँ निगेटिव आयन है, यहाँ पॉजिटिव आयन है. ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय निगेटिव आयंस. ईच निगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय positive ions. So in ionic solid the constituent particles are oppositely charged ions. Already you know about the constituent particles. These particles may be atoms, molecules or ions. यहाँ पे जो constituent particles हैं ये रहेंगे ions. In case of covalent solid, the solid in which covalent bond is present, that is known as covalent solid. And here these constituent particles are nothing but atoms, and in between these atoms covalent bond is present. The bond which is formed by mutual sharing of electrons, that is known as covalent bond. And there are different, here we will discuss about the allotropes of carbon, that is diamond, graphite and fullerene. All these things you have learned in the 11th standard. Covalent solids are poor conductors of electricity. Diamond is bad non-conductors of heat and electricity. These two allotropes can conduct electricity. And what is the reason? It is about the one delocalized electron which is present in graphite and fullerene.
All these things you have learnt in 11th standard. So in case of covalent solid, these are poor conductors of electricity. Now here, third type of solid, it is the molecular solid. Molecular solid. In case of molecular solid, look at this figure. The constituent particles are molecules. Constituent particles are molecules. Here we will observe three types of molecular solid. First है polar molecular solid. Second is non-polar molecular solid, and third is intermolecular hydrogen bonded molecular solid. In case of polar molecular solid, the constituent particles are polar molecules. Polar molecules. For example, HCl, SO2, etc. Now, HCl exists in gaseous state and it is its standard state. If we compress HCl, it will convert into liquid state, and if we will compress this liquid state, it will convert into solid state. Therefore, polar molecular solids possess low melting points. Here HCl molecule, here I will draw this figure again. Suppose it is simple cubic unit cell, and these constituent particles, suppose it is HCl molecule, HCl molecule, HCl molecule, HCl. Like this, over here all HCl molecules are present, and you know this is HCl and it is one of the dipole. Di means two, and it is for positive and negative center, plus delta charge and it is minus delta charge. It means that partial positive charge is present on hydrogen, partial negative charge is present on chlorine. It is one of the dipole. The force of attraction in between these two dipoles, it is known as dipole interaction. So in polar molecular solid, the force of attraction is dipole interaction, and here it is about the polar molecular solid. In case of non-polar molecular solid, for example, alkane, H2 molecule, Cl2 molecule, I2 molecule, etc. And here, suppose here it is simple cubic unit cell, and these constituent particles are, suppose H2 molecule, over here all H2 molecules are present. It is one of the non-polar molecule, and in between these two non-polar molecules, the force of attraction is weak dispersion force, or it is also known as London force, and it is weak. One question is from the MCQ. Here one example is CH4. Higher alkanes are known as waxes. Higher alkanes, these are wax. And one question is of MCQ that wax is a, चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे: आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड,
कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। योर आंसर विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैक्स है, ये इस क्लास में आएगा अल्केन्स में, एंड इट इज वन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड इट इज वन ऑफ द क्लास ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो हियर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको मिलेगा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको मिलेगा डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। नाउ थर्ड टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यू नो अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, the force of attraction in between hydrogen and any other electronegative element. any other electronegative element में हम लेंगे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सो हियर it is simple unit cell and these are constituent particles। इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HF मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल like this। so here suppose one H2O molecule, H2O molecule, H2O molecule, H2O molecule, and you know H2O in solid state it is known as ice, it is in gaseous state, it is in gaseous state। if we compress these gaseous state we will obtain the solid state। it is one of the dipole, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इट इज वन ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और इसमें इन दोनों के बीच में जो हमको बॉन्ड मिलेगा दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। okay, so it is about the intermolecular hydrogen bonded molecular solid। these three are the types of molecular solid। then next type is metallic solid, the solid in which metallic bond is present, it is known as metallic solid। and here the constituent particles are the atoms of metals। metals हैं उनमें हमको मिलेंगे मेटेलिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर लाइक दिस। मेटेलिक बॉन्ड है, द मेटेलिक बॉन्ड इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between positively charged metal ion and positively charged metal ion, it is known as cation, and delocalized electron, delocalized electron, the force of attraction in between these two it is known as metallic bond। force of attraction in between positively charged metal ion that is known as cation, and delocalized electron it is known as metallic bond। delocalized electron it means its position is not fixed, it can move freely throughout the crystal, so it is known as delocalized electron। here you can observe this figure, it is the this figure it is the metallic crystal, these are positively charged metal ion and these are electrons, it is known as electron C model। what does it mean? the positive ions are embedded in the sea of electrons positive ions of metal are embedded in the sea of electron, it is known as, this model is known as electron C model, and these electrons can freely move throughout the crystal, its position is fixed but the electrons can be freely moved throughout the crystal, so therefore these electrons are known as delocalized electrons। this model is known as electron C model। okay, so it is about the metallic solid, fourth type of solid। one more thing in case of solid state, that is they possess the properties that is known as
isotropic property, anisotropic property, then isomorphism, then polymorphism. एक एक मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, और जब हम डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन लिखेंगे इन बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये इसका पॉइंट आना चाहिए. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, amorphous solids are, it is the property of crystalline solid and it is the property of amorphous solid. Now suppose this figure, it is one type of constituent particle and it is another type of constituent particle. Here alternate particles are present like this. This figure is for explanation of anisotropy. Now देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये आता है तीसरा कॉम्बिनेशन. It is the ability of crystalline solid. It is the ability of crystalline solid to change the physical properties when studied along different directions. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, thermal and electrical conductivities. These properties will change when studied along different directions, and it is the property of crystalline solid. And here in case of amorphous solid, physical properties will not change when studied along the different directions. यहाँ जो प्रॉपर्टी रहेगी वहाँ वही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में, वही सेम प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में. सो इट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid. Now what is the meaning of isomorphous substance or isomorphism? Iso means same, morph means form, poly means many, morph means form. Isomorphous substance, polymorphous substance. The crystals which possess same crystal structure, and possess same atomic ratio, that is known as isomorphous substance. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaF MgO, 1 atom of sodium, 1 atom of fluorine. We can write the ratio like this: 1 atom of magnesium, 1 atom of oxygen. We can write the ratio like this. These solids are isomorphous in nature. They possess same atomic ratio. इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम मिल जाएगा. सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaNO3 and CaCO3, 1s2 इसका रेशो मिल जाएगा हमको 1s2 So these two substances are isomorphous in nature. What is the meaning of polymorphous substance? When the same substance crystallizes out in 2 or more different forms at different conditions. It is known as polymorphous substance. Condition means, I told you that the condition is about the condition of temperature and pressure, and you can say this polymorphous substance, that is these are allotropes. बहरूपिया, उर्दू में इसको कहा जाएगा बहरूपिया. और कार्बन का आपको पता है, ये कार्बन का दैट इज डायमंड. ये डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन. कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स हैं, एंड वी हैव लर्नड अबाउट दिस इन 11th स्टैंडर्ड.
सो ये सब एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये सब एग्जाम्पल देख के ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर आए आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसका रेशो आए, एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द classification of solid, crystalline solid, amorphous solid and classification of crystalline solid. That is the 4 types of solid: ionic solid, molecular solid, covalent solid and metallic solid. And in case of sodium, delocalized electron is 1. In case of magnesium, delocalized electrons are 2. In case of aluminium, delocalized electrons are 3. ये तीनों मेटल्स देखते हैं आप। अब सोडियम कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ये आपने पढ़ा है। सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तार आपने देखा है, वो हाथ से आप इस तरह करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और एल्यूमिनियम, इसको कट करने के लिए पता है आपको कि मशीन लगती है ये। तो इनका जो हार्डनेस का ऑर्डर रहेगा, इट इज लाइक दिस। delocalized इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जाएगा, हार्डनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड ऑल दीज थ्री, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर देयर, कॉमन प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर malleable, metals are malleable, ductile, they can conduct heat, they can conduct electricity and they show luster. Metals are lustrous in nature. All these properties are due to presence of these delocalized electrons. Malleability, it can be hammered into thin sheet. Ductility, it can be drawn into thin wire. It can conduct heat, electricity, and it can show the luster. All these properties are due to presence of these delocalized electrons. So here it is all about the classification of solid and classification of crystalline solid. Now ये जितनी फिगर्स देखी हमने यूनिट सेल का मैंने ड्रॉ किया था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल, इट इज नोन एज यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट repeating structural unit of a crystal, it is known as unit cell. जैसा शेप यूनिट सेल का रहेगा, जैसा शेप यूनिट सेल का रहेगा वैसा शेप पूरे क्रिस्टल का रहेगा। ये एक यूनिट सेल है। इट कैन एक्सटेंड इन द प्लेन, ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अगर आप प्लेन ऐसा ले लेते हैं, it can extend on the plane, in front of the plane and back side of the plane. जैसा शेप यूनिट सेल का है वैसा शेप हमको पूरे क्रिस्टल का मिलेगा। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज द यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल, इट इज नोन एज द यूनिट सेल। नाउ सपोज इट इज द यूनिट सेल। देखिए ये यूनिट सेल है, ये इनके पार्टिकल्स हैं। दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनको हम कह सकते हैं स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट और ओनली पॉइंट। जैसा इन्वायरमेंट इस पार्टिकल का है वैसा इन्वायरमेंट इसका है, वैसा इन्वायरमेंट और सराउंडिंग इस पार्टिकल का है, वैसा सराउंडिंग इस पार्टिकल का है। देयरफॉर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड the space lattice point, or you can say only point. Now there are the constituent particles or the points can be arranged into 7 different patterns. 7 different patterns, and these 7 different patterns are लाइक दिस। ये फिगर आपकी बुक में दी हुई है, आपकी बुक की ही फिगर है, मैं ले रही हूँ ये। लुक एट दिस टेबल। ये देखिए, ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये नेम है यहाँ पे, और
बता रही हूँ अभी इसके बारे में। 7 systems, that is cubic unit cell. Cubic unit cell, it is orthorhombic, it is tetragonal, it is monoclinic, rhombohedral, triclinic, hexagonal. These are 7 systems. अब इसमें आप देखिए 3 सिस्टम है, एक है सिंपल और प्रिमिटिव, सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड, थर्ड इज फेस सेंटर्ड। ये सिंपल देखिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, सपोज इट इज द क्यूब, इसके 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 कॉर्नर, यहाँ भी 8 कॉर्नर। हाँ, एक पार्टिकल यूनिट सेल के बॉडी में प्रेजेंट है, यूनिट सेल के बॉडी में प्रेजेंट है, सो इट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, एक सॉलिड अगर आप लेंगे तो इसके 6 फेस हमको मिलेंगे, 6 फेस मिलेंगे। हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल, हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल, इसको कहा जाएगा फेस सेंटर्ड। यहाँ देखिए आप, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और इसके बाद ये आता है, इसको कहा जाता है बेस सेंटर्ड, और इसका एक वर्ड और है, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज एंड सेंटर्ड। सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल में आपको ये 2 टाइप मिलेगा, सिंपल और प्रिमिटिव, और दूसरा मिलेगा हमको बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप मिल रहा है, सिंपल और प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल में हमको मिल रहा है एक ही टाइप है, दैट इज सिंपल और प्रिमिटिव। ट्राई क्लिनिक में 1 टाइप, हेक्सागोनल में इट इज 1 टाइप। नाउ हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेविस लैटिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेविस लैटिस? What is brevis lattice? These lattice points can be arranged into 14 different possible ways. These lattice points can be arranged into 14 different possible ways. It is known as brevis lattice. बस इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही है। अब ये 14 देखिए आप, ये आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके, ये मिल रहा है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेविस लैटिस, ये मिल रहा है, ये ब्रेविस लैटिस। ये 14 पॉसिबल वेज है ये सब। इसके आप कार्डशीट के ये सब मॉडल्स भी आप बना सकते हैं आप। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमको दिख रहा है ये A है, ये B है, ये C है,